Hello learners. Today we are going to start with the chapter Breathing and Exchange of Gases from the unit Human Physiology. वैसे तो ये पूरा यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाई? Because after analysis of the previous 8 years of NEET examination, it is seen that on an average, at least 3 to 4 questions are asked from this chapter every year in the NEET exam, right? This means roughly 12 to 16 marks of your exams are based on this chapter. This is quite a tricky chapter because we have somewhat calculations in it. So please pay attention and understand this chapter nicely. Alright, so the motive to study this chapter is that we need to find answers to certain questions. Like, what is breathing? First, we'll find out what breathing is. What is breathing? What is respiration? We will understand the concept of respiration. Yes. And most importantly, why they are important to life. In this lecture, we will find answers to all these questions. Now in junior classes, you must have read that there is some process known as breathing and there is some process known as respiration. Moreover, we use these terms synonymously. But now that you are going to give NEET exam, you must understand that these two terms are different and can't be used interchangeably. So let us study what is the difference between both of these terms. Now, NCERT has clearly mentioned that breathing is known as pulmonary ventilation. It is known as pulmonary ventilation. Ventilation. Now, I guess you all are aware what ventilation is, right? So what happens is whenever you are in a single room and you feel suffocated, then you tend to open your windows and doors, right? जिससे हवा क्रॉस कर सके and you feel a little bit relaxed. So that is what ventilation is. Now what exactly means pulmonary? Pulmonary का मतलब देखें तो बेटा it is always and always related to the lungs. ठीक है? Wherever you see this word pulmonary, always relate with the lungs. It means the ventilation that is taking place inside the lungs is what is pulmonary ventilation, right? And we are clearly relating it with the process of breathing. All right. Now, if you talk about respiration, it is an oxidation process. It is an oxidation process. So, you see this difference that हम breathing में simply बात कर रहे हैं exchange of gases की, and in process of respiration, we are talking about oxidation process. That is a biochemical process. Now we are talking internally more in the depth of exactly what process is taking place in the respiration, right? All right. Now oxidation process, let us talk about oxidation process now. Oxidation process means that we are using oxygen to break down something. We are using oxygen to break down something. Now we will understand what that something is and how it is breaking it, right? Now let us understand the difference in this way. Let us imitate breathing. Breathing करके देखते हैं. You all can do it with me. For example, if I have to take in oxygen अगर breathe in करना है तो how will I breathe it? That is how I have taken in the oxygen. Now if I have to give out carbon dioxide from my mouth or through my nose, so how will I do it? So that is how I am breathing out carbon dioxide. So ये क्या है बेटा? This activity is called as breathing. This activity is called as breathing, right? Now, so this activity is happening just between your body and the surrounding. But when this exchange of gases takes place within your body and the blood, it is altogether a different process, right? Now, so simply breathing is a simple process of exchange of gases. So here is our first difference, that it is a physical process involving the exchange of oxygen and carbon dioxide mainly. So the exchange of gases we are talking about, इसमें हम main gases किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about oxygen and carbon dioxide,
right? On the other hand, if we talk about respiration, it is a biochemical process. See, it is written here also, biochemical process. Now this term is very, very important because this is how you will understand the difference between breathing and respiration. So it is a biochemical process that involves oxidation of glucose. Now that's something that I wrote here. It breaks down something. So basically it breaks down the oxygen to carbon dioxide and water. Alright, यहाँ पे किसके हो रही है ऑक्सीडेशन, मतलब क्या? We are talking about the breakdown here. Alright, किसकी breakdown हो रही है? Breakdown of glucose into carbon dioxide and water. Now understand this. Whenever any work is taking place or whenever any work is done, we know that some amount of energy is required. Yes, कोई तो एनर्जी लगती है, कोई एनर्जी तो बेटा आती होगी ना इसकी वजह से, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो, right? So in this case, in the case of respiration where this breakdown is taking place, here energy is released. ये काफी यूनिक फीचर है. It is a very unique feature in case of respiration. Here energy is released, and energy means what? It means the production of ATP. It means the production of ATP. And ATP का full form क्या है? ATP is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. So it means in case of respiration, the production of ATP takes place. Now this becomes our second difference, that in case of respiration, ATP or energy is released along with carbon dioxide and water. But in case of breathing, energy is not released. Here energy is not released. यहाँ पे एनर्जी का काम ही नहीं है, बिकॉज बेटा दिस इज जनरल एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस, राइट? इट इज सिंपली द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, दैट्स ऑल. So it won't require energy, it will require energy, means energy will not be released in this process. Okay, there's a difference. Energy requirement is there, but release of energy is a different thing. Alright, because energy release हम बात कर रहे हैं in terms of process, a biochemical process. But in case of breathing, यहाँ पे no biochemical process is there. No biochemical process is there. So यहाँ पे energy release की तो बात ही नहीं है. Alright? So this was our second difference. Alright? Now the next difference is that breathing takes place outside the cells, but on the other hand, respiration takes place within the cells. So the third difference is breathing takes place outside the cells. It means you are breathing in oxygen, but you are giving out carbon dioxide in the surrounding. That is your outside of the body, right? And understand this also कि cellular level पे, तो cellular level हम बाद में discuss करेंगे, that is more of a biochemical process. But उसके बाहर ही just बाहर से आपने ऑक्सीजन लिया, बाहर से you release the carbon dioxide, right? तो हमने उसको बोल दिया that it takes place outside the cells. But if we talk about respiration, the respiration takes place within the cell. Cell के अंदर ही. It means here cell organelles are involved. It simply means that cell organelles are involved in the process of breakdown. Now do you know that the breakdown of glucose को हम क्या बोलते हैं? What it is called as? So the breakdown of glucose जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस का मीन्स ग्लाइको ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. सो द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज टेकिंग प्लेस, right? And it is taking place within the cells in which cell organelles are involved, right? So the glycolysis process starts in the cytoplasm. For example, if I draw the cell, this is the cell I have drawn here.
And in this structure I have drawn it as mitochondria. This is mitochondria, all right, and this is the cytoplasm that I have drawn, all right. So now understand that when the glycolysis process starts, it first begins in the cytoplasm. It first begins in the cytoplasm, all right. Then it enters in the mitochondria where Krebs cycles takes place. Krebs cycle takes place, right? Glycolysis हो रही है बेटा किसमें? Start होती है cytoplasm में, then it enters in the Krebs cycle, through which 36 ATP is released. So if the question comes कि कितना ATP release होता है by the process of glycolysis, so the answer is simple. 36 ATP is released from the process of glycolysis. All right. Now, the next difference we will see that in case of breathing, there are no enzymes which are involved in the case of breathing, because as we know, it is a simple mechanical process, right? It is a mechanical process. Mechanical process. So there will be no enzymes that will be involved. But in case of respiration, there are certain respiratory enzymes that are involved in the process of respiration. So here the difference is respiratory enzymes are involved. All right. Now it's time for a mind-boggling question. Tell me, which one of these two processes is an active process? इनमें से कौन सा active process है? ये हमने बताना है. All right. Is it respiration or breathing? Now it's time for a mind-boggling question. Tell me, which one of these two processes is an active process? Is it respiration or breathing? Yes, respiration is an active process because it utilizes energy for oxidation. So here I'm writing that respiration is an active process. And the reason is because it utilizes energy, right? All right. But then breathing is a passive process. क्या breathing फिर passive process हो गया if respiration is active? No. Breathing is also an active process, but you'll ask how. This is also an active process. But now if you will ask me how, then it is because whenever breathing happens, there is the usage of muscles. Because it is a mechanical process. Mechanical process का मतलब muscles are being used in the process of breathing, right? And whenever muscle contracts, energy or ATP is used. Therefore, if ATP is used, it means it is an active process. So, respiration and breathing are both active process because there is a usage of energy or ATP. All right. Let us now start with the human respiratory system. We will study what are the organs of respiratory system and what are their functions. Now be active and sit down with your notebooks to make notes because this chapter is very important. I am repeating it again. First of all, the respiratory system is divided into two parts. One part is known as the conducting zone. One part is known as conducting zone, right? And the second part is known as the respiratory or exchange zone. The next part is the respiratory or exchange zone. All right. Now, conducting zone is a path where the exchange of gas happens, right? जहां पे exchange of gases होती हैं. Conducting means where the conduction of air is taking place. Getting my point? That is between the atmosphere and the lungs. Clear till now? Here basically what is happening is exchange of gases. Simple. Exchange of gases between your surrounding and the lungs. Right? That is what is conducting zone. Now, whereas the respiratory zone is that part
where actual respiration is taking place. Are you getting my point? Actual respiration, that is the biochemical process. Here respiration is taking place, and we have discussed that respiration involves the oxidation of glucose. It means it involves the biochemical process, right? Now where does this respiratory zone begins from? अब respiratory zone कहां से आता है, start कैसे, कहां से होता है? So now let us see that it obviously starts from our nostrils, right? We breathe in air from our nostrils, and it is also called as external nares, okay? From where the air will move into the nasal cavity. So the first air will move in the nasal cavity. It means we are taking in air from the external nares, which is going inside the nasal cavity like this. Clear till now? All right. Now from these nares, the air will move to the nasopharynx first. Now it will further move in the nasopharynx. Now this part is called as nasopharynx. Nasopharynx. All right. Now after the nasopharynx, the air will move further into the oropharynx. It will move further into the oropharynx, and lastly it will move in the laryngopharynx. All right. Okay, now let us discuss it in a more little detail. Yes, that pharynx is divided into 3 parts. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा. pharynx के हमने division देखी थी in the, कहाँ पे देखी थी, किस chapter में? Digestion में, right? Pharynx are divided into 3 parts, which are, we have seen, nasopharynx first, second is oropharynx, and third one is the laryngopharynx. And the functions we have already discussed previously in digestion वाला process, but हम एक बार और कर लेंगे इसको. That nasopharynx is the passage for air only. It helps in only and only passage of air. Passage of air. All right. Now the oropharynx is the passage of food and air both. It is the passage of food and air both, right? क्योंकि food कहाँ से आएगा? Food will come from oral cavity. It will also enter through the oropharynx, and air which is coming from the nasal cavity will also enter in the oropharynx, right? Now comes the laryngopharynx. Now it is also the passage for food and air, and इसका नाम laryngopharynx इसलिए because it is present near the larynx, right? It is present near the larynx. So this was about the pharynx. Till now respiration में air हमारी कहाँ से आई है? It has first entered the nasal cavity, then it has entered the pharynx, जिसमें pharynx divided है into 3 parts, that is nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. And then it enters, or it is entering in the larynx. From the larynx, now air enters in the trachea. Now this portion is trachea, right? It is also labeled here, it is trachea. Now the trachea bifurcates into 2 parts. Trachea divide कर रहा है ना 2 parts में. See, this is the first part and this is the second part. Now this particular part is called as primary bronchi. It is the primary bronchi, which in turn opens into the secondary and tertiary bronchi, because further division is taking place, right? यहाँ पे देख लो ये secondary, for example, this secondary and then tertiary. So this bifurcation is taking place further inside the lungs. Now the tertiary bronchus opens up into the bronchioles. So let me draw this portion. For example, this particular part I am drawing in an enlarged form. Enlarged form में मैं आपको draw करके दिखाती हूँ. So this is the, for example, this is the tertiary bronchi
right? Which is further opening into bronchioles. So this portion is the bronchiole. Bronchiole. All right. Now next the air moves into the alveoli. अब bronchiole के बाद air will move in the alveoli. So this circular structure at the end of bronchioles. Bronchioles के end में आपको ऐसे structure नजर आएंगे जो आपको you can see this in the image also. Now these globular structure, clusters of these globular structures. Now these are the alveoli. Alveoli. Now from the bronchioles, the air enters in the alveoli, right? Clear till now? Now this alveoli is the respiratory zone. यहाँ से respiratory zone start हो रहा है. Respiratory zone. Because why? Because the process of respiration, actual respiration takes place here. Clear till now? Now after this, the air moves to the alveolar duct and then the alveolar sac, which completes the pathway of your respiratory system. Now where exactly is alveolar duct and alveolar sac? So again, I am drawing a particular section of alveoli. For example, I am taking this section and I am drawing its enlarged form just below. All right. Now this is the structure that I'm talking about. This is, for example, the one of the structures of alveoli. Now internally, the long structures that you're seeing, which I'm drawing. Now these are the alveolar duct. Alveolar duct. And inside this is the alveolar sac. Alveolar sac. Now if you'll ask that why actual respiration takes place in the alveoli, so the reason being, you can see that how thin the membrane of alveolar duct and alveolar sac is. पूरे alveoli का ही जो membrane है बेटा, outermost layer जो है, that is very thin. And because of that only, the process of respiration can take place in the alveoli. Alright? Now I hope you understood this pathway really well. Now in NCERT, on page number 270, NCERT के page number 270 में, they have mentioned 3 important functions of the conducting zone, right? So, किसके functions mention किए हुए हैं? Functions of conducting zone. Conducting zone. All right? So let us discuss them and write them down here. Now let us talk about the first function of conducting zone, that is humidification of air. Humidification of air. All right? It means that it adds moisture to the air. Do you remember आप winters में कैसे windows पर blow करते हैं, है ना? And then you write your name on it. तो वो कैसे होता है? Because जब आप air बाहर की तरफ blow करते हो, that contains moisture, and when it comes in contact with the atmosphere, it makes a foggy appearance on the window, and that is how you are able to write on it, right? So humidification of air means it adds moisture. It adds moisture. So this is the first function of the conducting zone. All right. Now, second, it brings the air to the body temperature. जो भी air हम breathe करते हैं, उसको वो किसके temperature पे लेके आती है? To the body temperature. You know, when in winters आप air blow करते हो मुंह से, तो वो गर्म होती है. And similarly in summers वो ठंडी होती है. This is because the air is at our body temperature, that is 37 degrees Celsius. And this is called as the thermoregulation. It is called as the thermoregulation, which is done by the hypothalamus. Done by the hypothalamus. Thermoregulation means temperature regulate karna, to regulate the body temperature. It means you are taking in the air, and the temperature of air is also regulated in the body.
right? So this is the second function that we did. Now the third function is the filtration of air. It is the filtration of air. Now how does this happen? You know that our noses have some hairs which trap the dust particles. Okay, so all these functions are the functions of conducting zone. But if we talk about the function of respiratory zone, function of respiratory zone. So function क्या है बेटा respiratory zone का? It only has a single function. एक ही function है, is that the actual exchange of gases between alveoli and blood. Exchange of gases between alveoli and blood. And how? For example, this is the alveoli, this is the structure of alveoli, and these are the blood vessels present near to the alveoli. So the exchange of gases takes place through the capillaries and the membrane of alveoli like this. Chalo, next now let us discuss this diagram. It is a very important diagram. हम बहुत देर से इस डायग्राम को पढ़ते भी आ रहे हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं. सो ये है आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड व्हाट आर दीज? दीज आर दी लंग्स. तो इसमें हमारा बेसिक जो ऑर्गन हम जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज दी लंग्स. ऑलराइट, सो अब हम फर्स्ट शुरू करेंगे फ्रॉम द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटस ऑन द टॉप. सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, एपिग्लॉटस लिखा हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू NCERT, the epiglottis is an elastic flap-like structure. It is an elastic flap-like structure जिसका function है to cover the glottis. Now, where exactly is glottis? So, glottis is present somewhere here. Now, this structure is called as glottis. And this glottis is covered by epiglottis. Got it? And what is glottis? So glottis is another flap that covers the larynx. अब इसके just नीचे हम देखेंगे epiglottis के नीचे क्या है? Larynx. Alright? Now larynx is a cartilaginous box. अब आप देखो, in this image you will find out that larynx is somewhat looking like a box. So it is a cartilaginous box which helps in sound production and is hence called as sound box. So if you are able to hear me and if I am able to teach you, it is only and only because the sound is being produced with the help of larynx. Alright? And we know that from the picture that larynx किसमें जाके मिलता है? In trachea. So trachea is present just below the larynx. है ना? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है लेरिंग्स के जस्ट नीचे, दैट इज दी ट्रेकिया. ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बेटा ट्रेकिया की. ट्रेकिया हमने देख लिया है दैट इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है लेरिंग्स. अब लेरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ग्लॉटिस, जिसको कवर करता है एपिग्लॉटिस. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस और ये प्रेजेंट क्यों होता है? व्हाई इट इज प्रेजेंट? So what happens is when a person swallows food, the epiglottis folds backward to cover the entrance of the larynx, so food and liquid do not enter the windpipe and lungs. So basic function क्या है इसका? It prevents the entry of food and liquid in the windpipe. क्योंकि food and liquid बेटा कहाँ जाना चाहिए? It should go into the food pipe and not the windpipe, and that is why epiglottis is present here. Alright? So अच्छा, तो ये हमें पता लग गया that food की entry windpipe में prevent करने के लिए help करता है ये. जैसे आपको बोलते हैं ना पेरेंट्स कि बोलते बोलते मत खाओ, वो क्यों कहते हैं? बिकॉज वेन यू टॉक इन इट,
एयर कम्स इनसाइड एंड एपिग्लोटिस गेट्स कंफ्यूज्ड कि अब किसको कवर करूं, राइट? एंड द फूड एंटर्स द विंड पाइप व्हिच कॉजेस चोकिंग, उसकी वजह से चोकिंग हो जाती है, राइट? अब आगे चलते हैं बेटा, ट्रेकिया इज आवर विंड पाइप। ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? हमारी ये विंड पाइप होती है। Alright, बेटा, you must remember that larynx is called as the sound box and trachea is called as windpipe because you don't have to get confused, क्योंकि क्या होता है कि आप इसमें इंटरमिक्स कर देते हैं हम कि हम किसको क्या बोलते थे। So you must remember it and notes बेटा साथ साथ ही बनाने हैं। Yes? Okay. So बात करते हैं ट्रेकिया की। बेटा ट्रेकिया इज आवर विंड पाइप एंड ट्रेकिया के पास एटलीस्ट 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं। इट हैज अराउंड 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है? इट मीन्स कि अगर हम काउंट करेंगे, आपको रिंग्स दिख रही हैं ट्रेकिया के ऊपर, दीज आर द रिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ट्रेकिया। नाउ अगर आप काउंट करोगे तो इनका नंबर क्या होगा? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 एंड दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। किनकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज। इतनी बात क्लियर होगी बेटा हमें, ठीक है? एंड अगर आप इनके शेप की बात करें तो देर इनका शेप कैसा होता है? सी शेप्ड। इट इज अ सी शेप्ड और इनकम्प्लीट रिंग्स and the function of these rings is that they protect the collapse in the absence of air। ये इन रिंग्स का एक बेटा, ये क्योंकि क्या है, इट इज प्रेजेंट अराउंड द वर्टिब्रल कॉलम, तो क्या होगा कि कई बार क्या होता है एब्सेंस ऑफ एयर हो तो इन दैट केस इट जनरली इट विल कोलैप्स। अगर कोई इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इट विल कोलैप्स इवेंचुअली, बट ये रिंग्स क्या करती हैं एब्सेंस ऑफ एयर में इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। Now this trachea divides into primary bronchi at 5th thoracic vertebrae level। Now look at trachea। Trachea के आप एंड में देखोगे that it is divided into primary bronchi, दो जगह, एक तो राइट लंग में एक लेफ्ट लंग में। और ये होता किस पोजीशन पे बेटा? इट हैपेंस एट द 5th thoracic vertebrae लेवल, ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा, उसके 5th thoracic vertebrae लेवल पे डिविजन होती है किसकी? ट्रेकिया की इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है जी? वी हैव कवर्ड द सिस्टम टिल हियर। नाउ द प्राइमरी ब्रोंकाई ओपन्स इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन द सेकेंडरी ओपन्स इनटू द टर्शियरी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई। Now primary bronchi will open into the secondary bronchi and then to the tertiary bronchi। समझ आ गया? Now look at the left lung। आपको दिख रही होगी ये ब्रांचिंग, आपको वेरियस ब्रांचिंग दिख रही है। दिस इज द ब्रांचिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। यहीं पे आपको वो डिविजन्स जो हैं हम जिनकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। समझ आ गया सभी को? Now why does this happen? अब ये होता क्यों है? It is because to increase the surface area for exchange of gases। It helps in increasing the surface area for exchange of gases। It increases the surface area for exchange of gases। Why? Because जितना extensive network होगा उतनी ही जल्दी exchange of gases होंगे। क्योंकि आप देख सकते हो बेटा इन दी लेफ्ट लंग देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, है ना? एंड इट इज बिकॉज कि जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा जल्दी फटाफट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। ओके, सो ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी ब्रोंकाई एंड देन द ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है जी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे भी चुकी हूं पहले। Now each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag called as alveoli। See, आपके मार्क भी है पिक्चर में, दिस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट? अब ये क्या है बेटा? ये alveoli है, इसके बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले, एंड इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द bronchioles।
समझ आ गया? Now let us talk about our two lungs which are present in our body. So this is the right lung, ये right lung है, and this is the left lung here, right? अच्छा. Now in the lungs there are some fissures. कुछ fissures होते हैं. Fissures means what? Cuts. अब जैसे क्या होता है कि आपने रोटी खाते हो ना, तो हम क्या करते हैं, जब हमें रोटी तोड़नी होती है देन व्हाट वी डू, हम अपने हाथों से ही कट लगाते हैं, राइट? तो क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाती है, राइट? सो सेम इज द केस इन द लंग्स. अब अगर हम राइट लंग की बात करते हैं बेटा, तो राइट लंग में देयर आर टू फिशर्स. ये लग गया पहला कट विच इज हॉरिजॉन्टल, एंड ये लग गया दूसरा कट विच इज ओब्लीक, है ना, थोड़ा वर्टिकल है, थोड़ा टेढ़ा है. दैट इज वाई इट इज द ओब्लीक फिशर. तो ये बेटा हमने कितने फिशर्स लगा दिए हैं राइट लंग में? दिस इज नंबर 1, ये एक है फर्स्ट नंबर, दिस इज नंबर 2. समझ आ गया? 2 फिशर्स. अच्छा, नाउ वी सी, हमने बात कर ली कि अच्छा, आई विल गिव यू अ लिटिल एग्जांपल कि आपने वही सेम रोटी है, आपने अगर उसमें 2 कट्स लगाए हैं, 2 फिशर्स लगा दिए, तो उस रोटी के बेटा कितने डिविजन्स हो जाएंगे? How many divisions will be there? 3, right? तो बेटा लंग्स के भी इसी तरीके से 3 पार्ट्स हो गए when you put 2 fissures. The topmost, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले को हम बोल देते हैं सुपीरियर. सबसे पहले वाले को हमने क्या बोल दिया? सुपीरियर. बीच वाले को बोल दिया मिडिल लोब, एंड द लास्ट वन इज द इंफीरियर लोब. इंफीरियर लोब. तो देयर आर 3 डिविजन्स इन द राइट लंग. ये बात समझ में आ गई बेटा? एंड बट इन द लेफ्ट लंग, अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें, तो वी हैव ओनली 1 फिशर्स एंड दैट इज ओब्लीक. एक ही फिशर होता है एंड वो ओब्लीक होता है, जिसमें हम टॉप मोस्ट को क्या बोलते हैं? सुपीरियर लोब, एंड नीचे वाले को हम बोल देते हैं इंफीरियर लोब. इंफीरियर लोब. ठीक है? ओनली 2 फिशर्स आर प्रेजेंट इन द राइट लंग. समझ आ गया? एंड इफ यू सी प्रिसाइसली, अब आप देखो बेटा लंग्स में, तो आपको एक नॉच दिखेगा इन द लेफ्ट लंग. ये नॉच है जहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, एंड इट इज देयर बिकॉज ऑफ अ वेरी स्पेशल रीजन. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा. इट इज देयर टू अकोमोडेट आवर ब्यूटिफुल हार्ट. आपको दिख रहा है हार्ट बीच में प्लेस्ड. It is there to accommodate that beautiful heart, and the heart lies in the middle of these lungs. अब आप देख सकते हैं बेटा हार्ट कहां प्रेजेंट है? दोनों लंग्स के बीच में. एंड जिस कैविटी में ये हार्ट प्रेजेंट है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज mediastinum. It is called as mediastinum. All right. So where is the heart? It is inside the cavity. ठीक है जी, जिसको हम बोल देते हैं mediastinum. Now the heart is tilted towards a single side. अब अगर आप नोटिस करो अपने, if you touch your chest, तो आपको फील होगा that heart is on a single side and that side is the left side. किस साइड में होता है हार्ट? On the left side. वो क्यों? Because the heart is always tilted towards the left side. द रीजन कि हम बोलते हैं हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इट इज बिकॉज कि वो टिल्टेड होता है. इट इज क्वाइट हेवियर ऑन द लेफ्ट साइड, एंड दैट इज व्हाई इट इज टिल्टेड देयर. एंड यू नो देयर आर very few people, less than 1% people, who have their heart tilted towards the right. Although that is a very rare case. Generally heart लेफ्ट साइड में ही होता है, बट ये बहुत रेयर केस है जब हार्ट जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट हो. Now we will talk about pleural membrane. अब हम बात करेंगे pleural membrane की. Pleural membrane. अब क्योंकि ये membrane है, it will be present on the covering of the lungs. तो बेटा यहाँ पे देख रहे हो pleural membranes marked है. ये येलो कलर का आपको जो membrane दिख रहा है, इसमें आपको 2 लाइंस दिख रही हैं, राइट? एक तो बाहर की तरफ है आउटर, एक है इनर की तरफ. तो these 2 लाइंस बेटा इनको क्या बोल देते हैं हम? First one is the outer membrane
एंड सेकेंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई हमें। ओके, अब जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है बेटा उसको बोलते हैं हम पेराइटल प्लूरल। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम हमने क्या ले लिया है, पेराइटल प्लूरल। ठीक है, एंड इनर वाली को हम बोलते हैं विसरल प्लूरल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, विसरल प्लूरल। समझ आ गया सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा विसरल की। एक आउटर तो आपको समझ में आ रहा है जो है कि आउटर साइड प्रेजेंट है, बट व्हाट इज विसरल? अब विसरल का मतलब होता है बेटा ऑर्गन। तो जो ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी उसको बोलेंगे हम विसरल, मतलब इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो इनर वाली बेटा मेम्ब्रेन है विसरल प्लूरल वो क्या है बेटा, वो इनर पार्ट्स ऑफ द लंग्स के कांटेक्ट में, एंड उसमें भी किसके कांटेक्ट में आपको दिख रही है, विच इज प्रेजेंट नियर द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज द एल्वियोलाई। आप देखो बेटा डायग्राम में, इट इज प्रेजेंट और इट इज इन कांटेक्ट विद द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के कांटेक्ट में। एंड जो पेराइटल प्लूरल है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो किसके कांटेक्ट में आ जाती है बेटा, दैट इज इन कांटेक्ट विद द रिब केज, बिकॉज वो आउटर साइड प्रेजेंट है। रिब केज के कांटेक्ट में। ठीक है जी, द रिब केज और द थोरेसिक लाइनिंग टू बी प्रिसाइज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स। अब आप देखो बेटा, जो येलो कलर्ड आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स, इनके बीच में जहां पे कलर्ड है येलो कलर से बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम, राइट, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। तो इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। व्हाट डू वी कॉल इट एज, प्लूरल कैविटी। एंड उस कैविटी के अंदर बेटा क्या होता है, inside that cavity there is a presence of a fluid, and that fluid is called as pleural fluid. उसको हम क्या बोल देते हैं, pleural fluid. ठीक है जी। Now the function of this fluid is to reduce friction during the process of exchange of gases. So बेटा generally जब fluid की presence होती है cavity में तो it is only to reduce the friction. ठीक है, and in this case it is reducing friction during the exchange of gases, and this also helps in shock absorption. ये shock absorption में भी help करती है। ठीक है जी, कैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल लंग्स की तरफ अगर मैकेनिकल कोई प्रेशर आ जाता है, शॉक आ जाता है, तो वो उसका इंपैक्ट रिड्यूस कर देता है, इट रिड्यूसेस इट्स इंपैक्ट एंड डैमेज नहीं होने देता, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन थोरेसिक रीजन विद द एब्डोमिनल कैविटी। ये बेटा आपका ऊपर जो लंग्स वाला पोर्शन है वो आपका थोरेसिक रीजन है, और लंग्स के नीचे वाला बेटा आपका एब्डोमिनल रीजन आ गया, एब्डोमिनल कैविटी आ गई। ठीक है, बट इट इज सेपरेटेड बाय अ मसल, वो एक मसल के थ्रू सेपरेटेड है। ठीक है, एंड दैट मसल इज कॉल्ड एज डायफ्राम। उसको क्या बोलते हैं बेटा, डायफ्राम। अब आपको दिख रहा है डायफ्राम कहां प्रेजेंट है, जस्ट बिलो दी थोरेसिक कैविटी। तो ये आपको थोड़ा यू शेप्ड आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज द डायफ्राम एंड इट इज अ फ्रेनिक मसल। नाउ टाइम फॉर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, दिस मस्कुलर सेपरेशन, दिस डायफ्राम is only and only present in mammals. ये और किसी में नहीं प्रेजेंट होता, इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन दी मैमल्स। समझ आ गया? आई होप बेटा आप सभी साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं, ये जो हम टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिस पे आपको नीट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सो नोट्स नहीं छोड़ने हैं, नोट्स साथ साथ बनाने हैं। Let us now try doing a question related to this topic. So this question has also been asked in your AIPMT 2011. So now let us do this question. So two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of. Okay, if a person is eating something and suddenly starts coughing, तो वहां पे किसकी गलती हो सकती है, किसकी मूवमेंट
इनकम्प्लीट हुई होगी। क्या पढ़ा था हमने? डायफ्राम, नो, डायफ्राम का तो फंक्शन ही डिफरेंट है। नेक, नो। टंग, नो। एपिग्लॉटिस, yes, because this particular function we studied in epiglottis. क्या पढ़ा था हमने epiglottis में? That it prevents entry of food and liquid in the windpipe. All right. So इस केस में क्या हुआ होगा? It might have failed to cover the larynx and the food might have entered in the windpipe. So that is why that person started coughing while swallowing some food. So our answer is answer number 4. Right? Now you can also attempt such questions on EduRep also because वहां पे आपको बहुत सारे DPPs मिल जाएंगे and you will also find 31 years NEET question papers as well. Right? So you must practice such questions for your betterment, better improvement of solving the questions, better improvement in understanding the questions as well. अब डिटेल में करते हैं थोड़ा ट्रैकिया से पैसेज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, राइट? सो योर ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 एयर पैसेजेस कॉल्ड ब्रोंकियल ट्यूब्स. ठीक है जी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है कि नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. ऑलराइट, नाउ वन ब्रोंकियल ट्यूब लीड्स टू द लेफ्ट लंग. This is your left lungs, let's suppose, and this is first bronchial tube. This is the first bronchial tube, and this one is the second bronchial. This one is the second bronchial tube. It means that it will be your right lung. All right, this will be your right lung. Now, the bronchial tube is the primary bronchi. अब ये bronchial tube है, इसको हमने क्या बोला है? It is the primary bronchi. See, यहाँ पे लिखा भी है left primary bronchus. Why? Because it is in the left lung. Understood? Now it will lead to the secondary and then to tertiary and then to the terminal bronchi. See, this is the left primary bronchus. Now it is leading to the secondary bronchus. See? And then it is leading to the tertiary bronchi, then to the initial bronchioles. Getting my point? यहाँ पे initial bronchioles है. Why? Because bronchioles are initiating at this point. Bronchioles have started to appear at this point. Are we clear till here? It means कि जो bronchial tube है, ये divide होती है पहले primary bronchus में, then it becomes secondary bronchus, then it becomes the tertiary bronchi. Okay, and then it will lead to the initial bronchioles and then to the terminal bronchiole. यहां पे ये starting है bronchioles की and this is the end of the bronchiole, right? That is why initial bronchioles लिखा है and then the terminal bronchioles is written. Now these terminal bronchioles will lead to some respiratory bronchioles. यहां पे हम देख रहे हैं कि जो terminal bronchioles हैं ये further lead कर रहे हैं respiratory bronchiole में. यहां पे एक्चुअल रेस्पिरेशन होती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल. समझ में आया? एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ट्रैकिया में, इट इज बिकमिंग नैरोअर एंड नैरोअर. राइट? कैसी हो रही है? ये नैरो होती चली जा रही है. आपको ये स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा है. ठीक है जी? एंड इट इज बिकॉज इट इज गेटिंग नैरोअर. इट मीन्स जो इसका मेम्ब्रेन है वो थिन होता चला है, जा रहा है, एंड इसी की वजह से यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज द मेम्ब्रेन्स आर क्वाइट थिन टुवर्ड्स द नैरोअर एंड ऑफ द ट्रैकिया. राइट? नाउ these terminal bronchioles have led to the respiratory bronchioles. Now they will further lead to the alveolar duct and ultimately in the alveolar sac. आपको पता है alveolar sac में भी alveolar duct present होते हैं. हमने इसका डायग्राम भी देखा है ना? For example, if I am drawing an alveoli here, यहां पे मैंने एक alveolus ड्रॉ कर दिया है. This is I am drawing the alveolar duct. ये मैंने alveolar duct ड्रॉ कर रही हूं मैं. And
उसके अंदर मैं ड्रॉ कर दूंगी एल्वियोलर सैक. दिस इज एल्वियोलर सैक एंड दिस स्ट्रक्चर इज द एल्वियोलर, दिस इज द एल्वियोलर duct. All right. So now this has the air which was passing through the trachea has now entered the alveolar sac finally. अब यहां पे ये क्या बन जाएगा? It will become the site of gas exchange. हमने पढ़ा था कि ये साइट बन जाएगा. क्यों? Because it has a thin membrane. और कौन सी membrane हमने पढ़ी थी एल्वियोलाई में? हमने किस चैप्टर में पढ़ा है? एनिमल टिश्यूज में पढ़ा है. थिन एपिथेलियल लेयर, थिन एपिथेलियल लेयर जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. दिस इज अ टेबल व्हिच हैज ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विद देयर फंक्शंस एंड दिस इज अ टेबल फॉर योर कन्वीनियंस टोटली बेस्ड ऑन NCERT. So let's understand this. Now, beginning with the nose or nasal cavity. So the function of nose or nasal cavity that it warms, moistens and filters air as it is inhaled. Now coming next with the pharynx, that is also known as throat. It is the passageway for air that leads to the trachea. Now comes the larynx and it is also called as the voice box or the sound box, where the vocal cords are located. Then comes the trachea, which is called as windpipe. It is generally lined with the fine hairs called as cilia, and the function of cilia is that it filters air. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा अराइज होता है, that its epithelium, जो epithelial layer होती है that you find in the trachea, it generally is pseudo stratified ciliated epithelium. It is generally pseudo stratified ciliated epithelium. एंड बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ये आपको नीट में पूछा जाता है कि किस तरीके का जो सिलिएटेड एपिथेलियम है दैट इज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, एंड योर आंसर विल बी pseudo stratified ciliated epithelium, right? Now moving on, next is the bronchi. Now bronchi क्या है बेटा? इनका फंक्शन होता है, there are two branches जो हमने देखी थी, primary branches which arise from the trachea and each lead to a lung, and दोनों ही branches where they lead to? They lead to the lungs, two lungs, right? Next is the bronchioles. Now bronchioles बेटा हमने देखा, they are the small network like branches that leads to the air sacs, and these air sacs are called as alveoli, right? Next is the alveoli. Now alveoli का function क्या है बेटा? They are functional respiratory units. क्या है ये? Functional respiratory units where gases are exchanged. So the main function of exchange of gases takes place in the alveoli, right? Now अब हम ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, but there is so much to discuss. अब all the details about these structures and their tissues and alveoli will be discussed in the next lecture. Till then, go to EduRev and attempt the test and DPPs related to this topic to ensure your solid preparation. बेटा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी हैं कि प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, एंड इट इज ओनली गोइंग टू मेक यू परफेक्ट. थैंक यू.